Good morning, students. In the previous video, we have completed our third chapter. Now moving on to our fourth chapter, that is your Java revision tour. So here it is, your fourth chapter. And it is Java revision tour. Right? So in this chapter, we will discuss about what is Java. We will discuss about the Java compilation process, that how the Java programs are going to run on the computer system. Then we will study about the bytecode, about the JVM, about Java APIs. So this is our topic for today. So moving on to the very first topic, what is Java? So it is a programming language originally developed by James Gosling at Sun Microsystem. In which year? In 1995. Initially, actually, it was given in 1991, but there was some drawback of that language. So later on, some advanced version were released and it was named as Java. Then the language derives much of its syntax from the C and C++, but has a simpler object model. That means it follows, we are having two language like C and C++ as the high level language, and it takes the syntax, whatever syntax is defined in C, C++ language, the same syntax Java also follows, because it is also a OOP oriented language. That means object oriented language, and Java is also a object oriented programming language. So that's why both follows the same properties mostly. Next, third point is Java applications are typically compiled to bytecode class file that can run on any Java virtual machine. It means when you write the Java programs, so it will get compiled, and after compilation this will produce a class file, and this class file will get passed on further to the JVM machine for execution. Now moving on to the next, Java bytecode. So bytecode are the machine language of the Java virtual machine, a feature that different the Java with other programming features. It is a programming code that once compiled is run through a virtual machine. Bytecode is the compiled format for Java programs, and once a Java program has been converted to bytecode, it can be transferred across a network and executable by the JVM. Now we will summarize all these 4 points. What it says when we write a Java program here, suppose we have written a Java program that is known as what? Source code. Okay, this will get compiled with the help of Java compiler, and it will produce a intermediate code known as bytecode, and this bytecode is platform independent code. So here we are saying what कि bytecode is the compiled format of Java program, means जो भी हम Java program लिख रहे हैं उसको जब compile करने के बाद जो हमें code मिलता है, that is known as what? Bytecode, that we have discussed with this example. And then once you will compile this and you will get the bytecode, so it will get transferred to the, that means this bytecode will get transferred over the JVM machine, passed to the JVM, and after that it will give you what? Java native code, right? Next, Java virtual machine. We will try to understand it with the help of an example also. Here I am giving just simple description of all the terms that we will use here in Java compilation process. Now here, before understanding what is JVM, let us first know what is virtual machine. A virtual machine is a layer of abstraction that gives a program one simplified interface for interacting with a variety of physical computers and their operating systems. Now, virtual machines says what? Ki it provides us a interface through which we can interact with the hardware and software components of a
कंप्यूटर सिस्टम। मतलब ये हमें एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, हमको एक इंटरफेस या कह सकते हैं एक तरीके से एक लिंक प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर की जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं और जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, हम उनके से इंटरेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल मशीन। सो वर्चुअल मशीन मीन्स वर्चुअल से इमेजनरी, दैट मीन्स इट डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट। ये CPU में एग्जिस्ट नहीं करता है फिजिकली, ये क्या होता है, एक आप कह सकते हो काइंड ऑफ कोड। It is a software set of some instructions, you can say it is a set of some instructions that are installed on a very small chip and which is known as what, virtual machine। तो virtual machine कोई physical entity नहीं है, कोई physical आपका unit नहीं है, it is a set of some instructions only, that means in the software form, right? So it is what, virtual machine here। Moving on to next, Java virtual machine। Java Virtual Machine JVM is the runtime engine of Java platform। ठीक है, प्लेटफॉर्म मतलब, प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि जिस पे आपके प्रोग्राम्स रन करते हैं, ठीक है, दैट मीन्स द बेसिस ऑन विच ऑल योर प्रोग्राम्स रन्स एंड एग्जीक्यूट। सो इट वर्क्स एज अ रन टाइम इंजन फॉर यू, जहाँ पे आपके जावा प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं उसके लिए एक इंजन की तरह काम करता है विच अलाउज एनी प्रोग्राम रिटन इन जावा और अदर लैंग्वेज कंपाइल्ड इनटू जावा बाइट कोड। उसको कन्वर्ट किस में करता है, वॉट एवर प्रोग्राम यू हैव रिटन इन एनी ऑफ द लैंग्वेज दैट विल गेट कंपाइल्ड इनटू द bytecode to run on any computer that has a native JVM। देखो जावा प्रोग्राम्स को रन होने के लिए आपको क्या चाहिए, यू नीड what, JVM। any computer system which is having JVM into it, you can easily run the Java programs on it। आप उस पर ही सिर्फ जावा प्रोग्राम्स को क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो जिसमें JVM इंस्टॉल्ड होगा, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज द बाइट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन एनी प्लेटफॉर्म। बाइट कोड को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो। प्लेटफॉर्म का मतलब हो गया कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हो वेयर देयर एग्जिस्ट JVM। सिर्फ उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे रन कर सकते हो, यानी कि उन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप रन करा सकते हो अपने जावा प्रोग्राम्स को जहाँ पे JVM एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इट इज़ अवेलेबल फॉर मैनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। Next, JVM executes the step-by-step instructions given to it from the bytecode। It says what, कि JVM जो है जो instructions execute करता है वो step by step करता है। And you know what, the another name of JVM is actually interpreter। The another name of JVM is interpreter, right? And you know that there is a difference between compiler and interpreter। What it is? Both are actually the translator। If I ask you the question that what is compiler and what is interpreter, so you will say both are language translators, both are language translator। Then what is the difference? The difference is that compiler convert source code into object code at once। कंपाइलर क्या करता है, जो आपने सोर्स कोड लिखा है, जो आपने अपना प्रोग्राम बनाया है, उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है एक साथ, एट वंस। बट कंपाइलर डू द सेम थिंग बट लाइन बाय लाइन। सो दिस इज़ द ओनली स्टेप, यानी कि स्टेप बाय स्टेप करता है कौन, इंटरप्रेटर। एंड कंपाइलर क्या करता है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो एट वंस सबको कन्वर्ट कर देता है। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। एंड JVM यूजेज बोथ कंपाइलर एज वेल एज इंटरप्रेटर। Next, diagram of JVM। Look at here now, try to understand the process, Java compilation process here। Now we have written here about Java source code। So Java source code means Java program, Java program, that means in the high level language, you can say it as high level language, that will get passed to the compiler, Java compiler known as JAVAC, Java compiler। ठीक है, आपने एक प्रोग्राम लिखा जिसको हम बोलते हैं क्या, सोर्स कोड, दैट विल गेट पास्ड ऑन टू द जावा कंपाइलर। व्हेन यू विल पास इट, सो इट विल प्रोड्यूस अ डॉट क्लास फाइल। ठीक है, दिस जावा ऑब्जेक्ट कोड, दिस इज एक्चुअली व्हाट, डॉट क्लास फाइल। यहाँ पे अगर आप जो प्रोग्राम लिखते हैं, यहाँ पे जो लिखते हो ये जावा सोर्स कोड, एंड व्हेन यू विल कंपाइल इट, तो सेव इट, तो आपका क्या होगा, ये डॉट जावा फाइल यानी कि डॉट जावा एक्सटेंशन से इट विल गेट सेव्ड। ठीक है, बट वंस यू कंपाइल इट, दैट सेम फाइल विल गेट कन्वर्टेड इनटू डॉट क्लास फाइल। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव मेड अ वेरी सिंपल प्रोग्राम, हेलो,
बाय द नेम हेलो, क्लास का नेम है उसमें हेलो, तो वो किस नाम से सेव होगी, हेलो डॉट जावा से. बट व्हेन यू कंपाइल इट एक्चुअली, सो कंपाइल होने के बाद वो क्या हो जाएगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू हेलो डॉट क्लास फाइल, राइट. तो क्या होगा, आपने कंपाइल किया एंड यू विल गेट हियर व्हाट, ऑब्जेक्ट कोड. नाउ दिस इज एक्चुअली अ इंटरमीडिएट कोड. This object code is known as intermediate bytecode. Make this diagram in your notebook also, please. Intermediate bytecode, right? Now this bytecode generated is platform independent. Platform independent means it can run on any of the operating system, whichever operating system you are using, irrespective of it, you can run it anywhere on any of the platform, on any of the operating system. But the requirement condition is what, that it must have JVM. उसमें JVM होना ज़रूरी है, तभी आप रन कर सकते हो, ठीक है. तो intermediate byte code is a kind of binary code that you can simply take into any of the storage devices and you can use it on any of the platform, ठीक है. This intermediate byte code. Now this byte code will get transferred over to the JVM. Look at here, this object code is verified and loaded into the Java virtual machine. Now here we are having what, JVM. This completely is JVM, Java virtual machine, right. Inside this JVM we are having what, Java interpreter. In this we are having Java interpreter. Here we are using what, compiler, and here we are using interpreter. So we can say that Java uses both compiler as well as interpreter, right. Now JVM is having what, Java interpreter as well as plus Java API also. You can write it here, Java API. API stand for application programming interface. Write the full form, Java API means Java application programming interface. Okay, so it is having interpreter which will convert this object code, this one intermediate byte code, into the native machine code. इस इंटरप्रेटर का काम क्या है, इस इंटरप्रेटर का काम ये है कि ये ऑब्जेक्ट कोड जो आपको यहाँ मिला था इंटरमीडिएट बाइट कोड को, दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द नेटिव मशीन कोड. अब नेटिव का मतलब क्या होता है, नेटिव मीन्स अकॉर्डिंग टू दैट मशीन ऑन विच यू आर रनिंग इट, ऑन विच यू आर एग्जीक्यूटिंग इट. आप जिस प्लेटफॉर्म पे उसको रन कर रहे हो वो उसके अकॉर्डिंग कोड जनरेट करता है. दैट मीन्स द कोड दैट विल गेट जनरेटेड बाय द इंटरप्रेटर विल बी स्पेसिफिक ओनली टू अ पर्टिकुलर मशीन, एंड दैट code generated cannot run on any other machine, है ना. So here and we are taking what, support of Java, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो. यानी कि JVM हमारा किससे इंटीग्रेट है, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज API. So API के लिए आपने लिखा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. So you can write a definition also for it, that the Java APIs are libraries of compiled code. Java API are libraries of compiled code that can be used in our programs. So this is the definition for API. Whatever packages you used, so many packages, right. So ये क्या होता है कि आपका कुछ compiled code, पहले से कुछ कोड ऐसा होता है जो ऑलरेडी compiled होता है, executed होता है, वो सब कहाँ स्टोर होता है, लाइब्रेरीज़ के अंदर होता है, ठीक है. तो ये सब हमारा किसके अंदर आता है, लाइब्रेरीज APIs के अंदर डिफाइन होती हैं, ठीक है. So here is the complete description of your Java compilation process. So repeating one more time here, firstly you will write the Java source code, and the extension for the Java source code is .java file. This will get passed to the compiler and it will produce a .class file here. So when the use of compilers to convert the Java source code into the object code, and this object code generated is known as intermediate byte code, ठीक है. Now this intermediate byte code will get passed to the JVM. JVM is having Java interpreter. The use of this Java interpreter is to convert this intermediate byte code into the native machine code. Means आपके पास जब यहाँ JVM और interpreter के पास पहुँचेगा तो suppose करो there are 4 persons, ठीक है. One is using suppose
Windows 8, one is using Windows 7, one is using Linux, and one is using Windows XP ऑपरेटिंग सिस्टम. सो क्या होगा, अगर आप विंडोज़ 8 यूज़ कर रहे हो तो सो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मशीन कोड जनरेट होगा. अगर आप विंडोज़ 7 पे रन कर रहे हो तो नेटिव कोड उसी के अकॉर्डिंग जनरेट होगा. लिनक्स पे यूज़ करोगे तो उसके अकॉर्डिंग होगा. विंडोज़ एक्सपी पे यूज़ करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग द कोड विल गेट जनरेटेड. सो दैट इज़ द वर्किंग ऑफ जावा interpreter. So it converts the intermediate code into the native machine code, right? So ये पूरा process आपको describe करना है. You can write it in your own language, and the same chapter actually was there in your 11th class also. So I have already provided the complete notes of this chapter in 11th standard, if you remember, right? Now here question can come in this way कि what is bytecode? First question that can come, what is bytecode? The second question is explain Java compilation process. This is your second question. Then next question is why Java is known as platform independent language. Why Java is platform independent? Now can you answer this? Why Java is platform independent? Because we have studied here the code bytecode, intermediate bytecode जो generate होता है हमारे पास, that intermediate bytecode is platform independent. So because of that generated in a intermediate code, we can say that Java is platform independent language. But you will properly explain bytecode also before answering it, ठीक है? So properly explain what is bytecode, then you will write that this bytecode is platform independent, hence we can say that Java is platform independent language, right? Then we have studied about what is the use of compiler, what is the use of interpreter, what is JVM. So these are some of the questions that can come, okay? So that's all about this topic. In the next video we will discuss about Java fundamentals, like what are keywords, how many types of keywords are there, and what are data types, and how to declare the variables, constant, operators. So these all the things we will discuss in the next video. So for today it's sufficient. Thank you. Have a good day.